Hello dear pharmaceutical friends. Today we are going to discuss about the clean area or clean room validation in pharmaceutical industry. How to perform the clean room validation. Let us start. Actually we can divide the test in two parts. First we are going to discuss some specific tests. Okay, then one by one we will discuss in details also. First of all, what we do, we check the air velocity. Air velocity measurement. And ACPH calculation. Okay. Then we perform HEPA filter integrity test. HEPA filter integrity test. Then next we perform airflow pattern test. Then fourth, we perform the non-viable particle count test. NVPC. It is non-viable particle count test. Okay. In specific test, lastly we perform recovery test. Recovery test of the area. These are some specific tests that we are going to perform during the validations. If we consider about the WHO TRS 1044 or the current GMP guidelines, we have to follow these tests. These are the specific tests. There are also some basic tests that we should do during the clean room validation. Then we perform some general tests. Some general tests that we are performing, just like physical verification of clean area, then temperature and humidity monitoring, right? Then third is the pressure differential monitoring of the clean area. And lastly is the microbiological monitoring. These all tests we need to perform during the clean room or clean area validation. Okay, now we will discuss one by one all the tests that we have, the specific test and general test that we should perform during the validation. One by one we will discuss. तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज एयर वेलोसिटी मेजरमेंट एंड ACPH कैलकुलेशन. तो ACPH कैसे कैलकुलेट करना है वो हम डिस्कस करेंगे, और एयर वेलोसिटी का कैसे हमें कैलकुलेशन करना है. वी आर टेकिंग एक थ्योरेटिकल एग्जांपल. सपोज देयर इज अ रूम whose length is 10 meter, or we can consider feet. In feet we are considering suppose 10 feet. Breadth or width is also 10 feet and height is also 10 feet. Right? Then what is the formula for calculation of this ACPH
ACPH is air change per hour. Air change per hour is the ACPH. It is equal to total CFM into 60 divided by room volume. Room volume. How to calculate the room volume? L into B into H. Length into breadth into height. Room volume. That is this one. Length, breadth, height. Okay. So first we need to calculate this total CFM. Right. Then we are going to put those values in the formula. Why this ACPH is required? First we need to discuss this ACPH. It is air change per hour. Means suppose air is entering in the room. Suppose there are clean rooms. Suppose first there is change room, then second change room, third, fourth change room, and then there is particular area that may be sterility area or that may be the filling area of the production. Okay. Air is entering through the HEPA filter in the rooms. So what HEPA filter is doing? Its pore size is 0.3 micron. So through the riser, air is going and returning through the HEPA filter, particulate matter free air. Okay, HEPA filter pore size is 0.3 micron. Means the particles that are coming down is less than 0.3 micron. Means all the particles greater than 0.3 microns are blocked there. तो जो भी एक्स्ट्रा पार्टिकल्स हैं वो सारे रोक दिए जाते हैं HEPA फिल्टर के थ्रू. तो रूम में जो एयर रहती है वो क्लीन एयर रहती है. तो उसी को मेंटेन करने के लिए क्या वो एयर वेलोसिटी सप्लाई हो रही है नहीं हो रही है वो हमें चेक करना है. कि तो मिनिमम ACPH मिनिमम इट शुड बी NLT नॉट लेस देन 20 से कम नहीं होना चाहिए. जो सबसे लास्ट वाला फर्स्ट एयर लॉक है आपका. और जो आगे के ग्रेड्स हैं, ये तो डी एरिया हो गया, सी एरिया का और ज्यादा होना चाहिए इसे. ठीक है, 40, 50, 60 ऐसे बढ़ता चला जाएगा. बी ग्रेड में और ज्यादा ACPH होगा. मीनिंग क्या होगा कि 1 मिनट में एयर चेंज पर आवर. सपोज किसी रूम का ACPH 60 है तो क्या हो रहा है, उस रूम की जो एयर है वो HEPA फिल्टर से फिल्टर हो गई. कितनी बार फिल्टर हो जा रही है? 60 बार 1 आवर में. यानी कि 1 मिनट में एक बार फिल्टर हो जा रही है. तो जितना ACPH बढ़ेगा एयर की क्वालिटी उतनी बढ़ने वाली है. राइट. तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं कि ACPH कैसे है, तो वही हम डिस्कस करने वाले हैं. तो पहले हमें निकालना है टोटल CFM. हमने कहा कि हमारे रूम का लेंथ, विड्थ और हाइट है. सपोज ये सीलिंग है रूम का और यहां पर क्या है, 4 HEPA फिल्टर लगे हुए हैं. इट इज हैविंग 4 HEPA फिल्टर्स, राइट, ऑफ द सेम साइज. Suppose I am drawing one of this HEPA here in magnifying form. Suppose this is it, HEPA filter, right? It is also 2 feet and this is also 2 feet. Means 2 by 2 feet is the dimension of this HEPA filter. Okay. Then CFM. CFM is cubic feet per minute of HEPA. One HEPA, this HEPA. How to calculate? We need one instrument with the help of that is called anemometer. Okay, that instrument is called as anemometer. With the help of anemometer, we calculate the air velocity. On the roof, HEPAs are installed. Then by using that anemometer, we check the air velocity under the HEPA, right? Just like this. This is the HEPA. Then we are checking using the anemometer the air velocity. तो air velocity हम चेक करते हैं anemometer यूज करके और डायरेक्टली डिजिटली वो रीडिंग प्रोवाइड करा देता है. सपोज यहाँ पर कितना ACPH एयर वेलोसिटी आ रहा है, इतना FPM फीट पर मिनट. FPM आएगा फीट पर मिनट में रिजल्ट शो करता है. सपोज यहाँ भी 80 आया, यहाँ पर 85 आ गया, 90 आया, 90 आ गया. ओके, तो ये एयर वेलोसिटी हमने 5 कॉर्नर्स पर वी हैव चेक्ड. लेफ्ट एंड राइट्स एंड मिडिल 5 कॉर्नर्स वी हैव चेक्ड. देन व्हाट इज द एवरेज? व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी?
वी कैन कैलकुलेट, यू कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस ना 99, सबको ऐड कीजिए, क्या होगा 80 प्लस 80 प्लस 85 प्लस 90 प्लस 90 अपॉन 5, इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो आप इसका देखेंगे कैलकुलेट करके कितना 85 ही आ जाएगा एफपीएम, फीट पर मिनट। तो ये क्या आ गया आपका, हमारा एवरेज एयर वेलोसिटी मिल चुका है हमको, जो कितना आ चुका है 85 एफपीएम, फीट पर मिनट आ चुका है, राइट। तो इट इज 85 एफपीएम। अब इसमें क्या करना है हमें, ये तो हमारे को एयर वेलोसिटी मिली, अब इसके एरिया के साइज से और मल्टीप्लाई करने का है, राइट। वी नीड टू डू द मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ हेपा। व्हाट, एरिया ऑफ हेपा से वी नीड टू मल्टीप्लाई। तो 85 into what is area of HEPA, 2/2, this 2/2 we need to multiply here, 2/2, okay. This is the result, this is the CFM, here it was FPM, feet per minute, it is converted into CFM, cubic feet per minute, okay. For one we have calculated, then now we will calculate total CFM. How we will calculate this, just learn this one. I can calculate by using the calculator. 85 into 2 into 2, it is coming 340. You can see here it is coming 340 CFM, okay. Note down this, I am noting it here, 340 CFM, right. We get, now we will make the further calculation. Now we will calculate the total CFM. Total CFM is calculated by multiplying CFM by number of HEPA. ओके, नंबर ऑफ HEPA से मल्टीप्लाई कर देना जो CFM आया था। कितना CFM आया था हमने नोट डाउन किया हुआ है 340। तो इट इज 340 into number of HEPA कितने थे हमारे, we were having 4 numbers of HEPA, okay. Now further we will calculate this one, 340 multiply by 4, we are getting 1360, 1360, right. This total CFM. Now by using this total CFM we will calculate the ACPH. Okay, now I am noting this one here, total CFM is 1360, it is the total CFM, okay. Note down this, yes. Now we will calculate the air change per hour, ACPH. We are having total CFM of 1360 into, we will multiply by 60. I will also tell why we multiply by this 60. L into B into H, 10 by 10 by 10, 10 into 10 into 10. Then you can multiply and divide, right. Like 1360 we are having into 60 divided by 10, 10, 10 means 1000. Okay, this one. We are getting 81 ACPH. 81 ACPH we are getting, okay. Means 81 times room air is changing per hour, okay. In per minute it is, if we divide this by 60 then 1.3, एक मिनट में 1.3 टाइम्स रूम की एयर चेंज हो जा रही है, ठीक है। जो कंटामिनेशन होगा वो रिमूव हो जाता है ऐसे ही करके। तो जितना ज्यादा ACPH रहता है उतना ज्यादा रूम में क्लीननेस रहेगा, पार्टिकुलेट मैटर जो जनरेट होगा प्रोसेसिंग के दौरान वो कंट्रोल रहने वाला है। तो इस तरह से हम ACPH कैलकुलेट करते हैं, जो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो वैल्यू थी ना हमारी वो फीट पर मिनट में थी, CFM फीट पर मिनट। इस मिनट को आवर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, फीट पर मिनट, डिवाइड में है तो डिवाइड के फर्दर 1/60 करेंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाता है।
इसलिए इस 60 से मल्टीप्लाई किया जाता है फॉर्मूले में, फीट पर मिनट को फीट पर आवर में चेंज करने के लिए। तो इस तरह से करके हम ACPH कर सकते हैं। तो ये पहला टेस्ट हमारा एयर वेलोसिटी मेजरमेंट एंड ACPH कैलकुलेशन। तो इन दिस वे यू कैन इजीली कैलकुलेट द ACPH ऑफ द एरिया, ओके, ऑफ योर HEPA फिल्टर्स। एवरी रूम का करना होता है आपको, ठीक है। अगर किसी फिल्टर पर कोई फिल्टर चॉक हो गया है, ये वो तो चेक होता है, उसको आपको चेंज कराना पड़ेगा। फिल्टर अगर चॉक है तो फिल्टर चेंज होगा, राइट। इस तरह की कुछ प्रॉब्लम है तो ओके। नेक्स्ट टेस्ट इज द HEPA filter integrity test. Okay, HEPA, all of you are aware, it is high efficiency particulate air filter having the pore size of 0.3 micrometer. Okay, it blocks all the particulate matter coming in the area, clean rooms. So this test is also known as PAO test. It is poly alpha olefin test. Okay, how we need to do this test? We have a poly alpha olefin generator. Okay, we are having the poly alpha olefin generator that generates the particles greater than 0.5 micrometer. As you are aware that suppose this is the ceiling. Here suppose there are 4 HEPA filters are installed and this is the side wall. Here is the return riser. These are the HEPA. This is the riser. Air movement is like this. Air is coming by the HEPA and going through this riser further and coming by the HEPA further in the room. Okay, then what are we doing? This PAO generator is kept here. This is poly alpha olefin generator. It will generate the particles of having the size 0.5 micron or greater. Those particles are going through the riser in the whole line of AHU. In all AHU line that are those particles are going and coming through this HEPA. HEPA, what will HEPA do? HEPA will block those particles. Okay. For the detection of that particular particle, we need to use a photometer. There is one instrument called photometer. By using this photometer, we can check the concentration of the particles. Means are the particles coming or not? So first of all, we use this photometer where we use this photometer and check here at this location. Right? Here first of all we have to check and we should get a concentration of 100% here. Okay, photometer will tell that here the concentration is 100%, right? This is called as 100% concentration or upstream concentration. Upstream concentration, right? At this level we are getting 100% concentration. Now these particles are going in the line of AHU and coming through this HEPA. If HEPA is torn, right, then those particles will also come out in the room through that HEPA. So by using the photometer, we will scan all the surface of the HEPA. Just like this is the HEPA, whole the surface of HEPA will be checked like this, right? And that is a digital photometer that is showing the reading, just like 0.001, 0.002. This is the leakage. Upstream concentration was 100%. Now the result through this HEPA filter, the particles are not coming. Suppose 008. This result
should not be more than, not more than, leakage should not be more than 0.01%. Okay, means 99.99% efficiency of this HEPA filter should be there. तो क्या करना है आपको, हर एक HEPA को चेक करना है, किससे, फोटोमीटर का यूज करके पूरे HEPA का फिल्टर का सरफेस को स्कैन करना है, राइट, और चेक करना है कहीं से कोई लीकेज आएगी तो क्या होगा, वहां पर लीकेज शो करेगा जो फोटोमीटर है, तो उस फोटोमीटर में जो रीडिंग है वो इस तरह की रीडिंग्स आएंगी आपकी, अगर आपका जो HEPA फिल्टर है कहीं फटा हुआ नहीं है तो, और ये कंडीशन आ रही है तो पास है क्योंकि 0.01 से कम है। अगर 0.01 से ज्यादा आ गया, सपोज करो कितना आ गया, 0.02 आ गया परसेंट में, तो ये फेल हो जाता है वो HEPA। तो वो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर HEPA को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसको रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा, फिर अपना वैलिडेशन रिपीट करना पड़ेगा स्टार्टिंग से एयर वेलोसिटी लेकर के, फिर आप आगे बढ़ेंगे HEPA फिल्टर इंटीग्रिटी पर। तो इस तरह से करके आप HEPA फिल्टर इंटीग्रिटी टेस्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टेस्ट इज द थर्ड नंबर, एयर फ्लो पैटर्न टेस्ट। दिस टेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड स्मोक टेस्ट। Which equipment is used for that? That is the smoke generator. Smoke generator. Okay. Or this is the water fogger actually. These are generating the fogs of water or mist of water, right? White color fumes are coming. By this we are checking the airflow pattern. It should be unidirectional. Okay, flow should be unidirectional in every area. Okay, actually suppose we are considering a feeling area. Okay, area where we have to do this test. This test is very important actually. Suppose let us consider this is your feeling machine. Okay, where your product is filled. You are here, it is your autoclave, double door autoclave. Okay, you are transferring the material using mobile LAF. So you need to show that at every step, from unloading from the autoclave up to the filling machine, your direction of that particular flow is unidirectional. Suppose unloading side of autoclave, it is done under the LAF. There will be the laminar airflow. Okay, outer surface of the autoclave is covered by the LAF, laminar airflow. This mobile LAF should be there. When you unload under LAF, so you have to show that LAF you will generate the smoke by using the smoke generator or water fogger. You will generate the smoke under LAF of here, and we'll check that all the direction is the direction of the fume is unidirectional. Okay, then load to the mobile LAF. You will check the same here under LAF. Then you will load the material to the filling machine, and during loading also you have to check that the filling machine LAF, it is also grade A. Where it is LAF, all area is grade A. So under mobile LAF, it is also grade A area. So in all grade A area, you need to show that unidirectional flow is coming. And also in the rooms, suppose grade C room is there, grade B room is there, you have to show that by using the smoke test, the directional flow is unidirectional in the room, in the whole room. There is no dead space where air is trapping. Okay, आपको क्या शो करना होगा, पूरे रूम में कोई डेड एरिया तो नहीं है जहां पर एयर ब्लॉक हो रही है, उसका मूवमेंट नहीं हो रहा है, या वहां पर टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है.
ओके, तो इस तरह से करके आपको क्या करना है, एयर फ्लो पैटर्न टेस्ट करना है और उसको चेक करना है कि आपके रूम में अंडर LAF, मशीन लोडिंग टाइम में एक्सेट्रा एवरी स्टेप पर आपको प्रूफ करके दिखाना है और ये आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करना होगा। ठीक है, एक तो इक्विपमेंट यूज में स्मोक जनरेटर था और दूसरा क्या यूज होने वाला है, वीडियो रिकॉर्डर। This you have to show to your auditor also during the audits. So by this way you can do the smoke test or airflow pattern test. You can also see the airflow pattern test by here under LAF, how the smokes are generated and airflow we are getting unidirectional. Okay, in this way you can show airflow pattern test. Next test is the non-viable particle count test, NVPC, right? Non-viable means non-living, non-viable. Actually it is defined in, you can check from the ISO guideline, ISO 14644- version number 1. All the area limits are given there. Currently in schedule M, revised schedule M, also there are limits given, revised schedule M. All these limits are given in right, WHO guideline also, WHO TRS 1044. Okay, so you can check the limits. Grade A, B, C, D area, all of you are aware that grade A is under LAF area. लैमिनार एयरफ्लो का जो एरिया होता है ना, वो ग्रेड A है. अब जो फीलिंग की जाती है एसेप्टिक फीलिंग, वो अंडर ग्रेड बी के जाए, रूम ग्रेड बी रहेगा और जो A/B रहेगा, मींस LF का एरिया जो फीलिंग मशीन का एरिया ग्रेड A, रूम ग्रेड बी रहेगा. आगे फर्दर एरियाज जो बाहर से शुरू करें तो ग्रेड D, C, B फिर A, इस तरह से रहने वाले हैं. तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, नॉन वायबल पार्टिकल काउंट करना होता है. तो इसके लिए क्या होता है, नॉन वायबल पार्टिकल काउंटर आता है. ठीक है, पार्टिकल काउंटर, लेजर पार्टिकल काउंटर रहता है. तो वो पार्टिकल काउंटर क्या करता है, डायरेक्टली दैट मेजर द नंबर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स, हाउ मच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द एरिया. ओके, so these are the limits given here in grade A, B, C, D areas per meter cube. Okay, this is the limit given per meter cube, right? Grade A, there are two conditions at rest in operation. In grade A area 3520, particles of 0.5 micron or greater than, that should be not more than 3520. Here 5 micron greater particle 20 in grade area at rest condition. तो इससे ज्यादा पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए ग्रेड ए में. ग्रेड बी में 3520 और 29, ग्रेड सी में 352 और 2900, ग्रेड डी 352 2900, right? Further in operation if we check, then this grade A area is same, you can see from here. Grade B area, the limit of here in grade C at rest, those are here, right? Means grade B area at rest and in operation it is becoming the grade C, like this. Similar is the case of C is becoming the D, you can check from here. And grade D is not defined as per current schedule and also WHO TRS, right? So this is the basic limits. Further, how you have to check or how many number of the samples you have to take using the particle counter. Okay, suppose your room, you are having a room of 4 by 4 meter square, means length भी आपके रूम का 4 मीटर है, breadth भी 4 मीटर है, right? तो टोटल हो गया कितना, 16 मीटर स्क्वायर. इस एरिया का आपको पार्टिकुलेट मैटर नॉन वायबल पार्टिकल काउंट टेस्ट करने का है. ओके, यू नीड टू परफॉर्म द पार्टिकुलेट नॉन वायबल पार्टिकल काउंट ऑफ दिस एरिया. देन हाउ मच नंबर ऑफ द लोकेशंस यू हैव टू सिलेक्ट. इन ISO 14644 it is given that there is a table, you can check from the guideline that if 2 meter square area, then one location, one sample you have to take. If 4 meter square area, 2 location you have to check.
10 मीटर स्क्वायर 5, 24 मीटर स्क्वायर 6. नाउ अब हमारा क्या है 16 आ रहा है. अब 16 किस में जाएगा? तो 16 देखिए 10 और 24 के बीच आ रहा है, तो हायर वाले को लेना है हमें. 24 के हिसाब से कितना 6. तो 6 लोकेशन पर हमें 6 सैंपल लेना होगा. वी नीड टू डू और परफॉर्म द टेस्टिंग फॉर द 6 different location. Suppose 4 corners, center and different what are the locations that are means critical locations. We need to select first of all on the basis of validation. Okay, then we have to take the sample. So in this way we can perform the non-viable particle count test. Right? Next test is the recovery test of the area. How can you perform that particular recovery test? Means suppose due to any circumstance electricity has gone, HU is shut down, then concentration of the particle increases in the area. Then how will your area recover, or what is the limit for that? So area recovery should be under not more than 20 minutes as per WHO guideline 1044 we have discussed. Okay, WHO TRS 1044. 20 मिनट से ज्यादा रिकवरी टाइम नहीं होना चाहिए. 20 मिनट के अंदर में वो रिकवर होना चाहिए. तो इसके लिए हम कैसे कर सकते हैं? वी कैन कंटामिनेट द एरिया ड्यूरिंग द वैलिडेशन बाय यूजिंग द पार्टिकल जनरेटर as we have discussed earlier. Polyalpha olefin particle we can generate. Okay, and we set the particle counter, non-viable particle counter. Okay. We will start setting that 1 minute interval. It will take the sample and give the result. ओके, तो 1 मिनट बाद क्या करेगा? एक बार एरिया कंटामिनेट हो गया. कंटामिनेट होने के बाद में हमें क्या करना है? HU ऑन करवाना है. HU ऑन करवाने के बाद में क्या होगा? सर्कुलेशन ACPH शुरू हो जाएगा, एयर फिल्टर होकर के आने लगेगा. तो बाय दिस पार्टिकल काउंटर रूम इज मॉनिटर्ड फॉर द एयर क्वालिटी और नॉन वायबल पार्टिकल्स. ओके, मिनिमम टाइम ड्यूरिंग दैट इट कम्स विद इन द. तो हमें देखना है कि 1 मिनट के रेफरेंस पे चलाया हमने. हमारा 1 मिनट पर एरिया फेल था 2, 3, 4, 5 से व्हाट आर पार्टिकल काउंट्स आर कमिंग डाउन, एंड एट 6 मिनट एरिया इज विद इन लिमिट. So that particular room recovery is 6 minutes. It is okay because it is coming under 20 minutes, right? So in the same way we need to check all the areas of ABCD grade that area recovery is coming within this 20 minute time or not. So this is the recovery test. Then other test, general test that I described earlier. First of all, before starting of the area validation, you can do the physical verification of the area. आपको क्या करना होगा? पूरे एरिया को चेक कीजिए. वॉल्स, सीलिंग कहीं पीलिंग ऑफ तो नहीं हो रहा है, राइट? कोविंग प्रॉपर है, एपॉक्सी प्रॉपर है. ओके, एरिया में कहीं रस्टिंग तो नहीं है. पूरा एरिया दैट शुड बी एज पर द क्लीन रूम, राइट? फर्स्ट you need to check that. Then you need to check the temperature and humidity monitoring of the area. That should come within limit. Next, you have to check the pressure differential. That should be at least 15 Pascal difference between the different grades. Okay. Then you need to perform the microbiological monitoring also. During microbiological monitoring, you can perform the plate exposure, air sampling you can do. Okay, surface monitoring you can do, the personal monitoring also. All of those tests should come within the limit during the area validation. In this way you can perform the clean room validation or clean area validation. This is the summary of the validation. You should refer particular guidelines of WHO guidelines or USFDA guidelines, UGMP guidelines, our schedule M also. All the details are given there. So step by step read that, understand that, then apply practical, and then you will be perfect in the validation of the clean rooms. So thank you, keep watching.
If anyone has not subscribed this channel, then please subscribe, and in next lecture we will discuss some new thing also. Thank you, keep watching.